Today we have to continue our paper molecular biology, and this is your lecture number 10. And in this lecture we are going to start another new topic, that is the types of different RNA. आज हम डिस्कशन करमा different types of RNA बाबत रे. Okay, basically we know that there are different type of RNA. Mostly हमें जेंटा जानी छु, that is the rRNA, जहाँ के कोई समय ribosomal RNA. Another one, that is the mRNA and your tRNA. तीनटा बेसिक टाइप ऑफ आरएनए बाबत रे हमें जानि छु, बट आहुरी काना काना डिफरेंट टाइप रो आरएनए अछि. ओवरऑल आज हमें डिस्कशन करमा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करमा गुटे सेपरेट क्लास रे गुटे क्लास रे हमें डिस्कशन करमा गुटे डिफरेंट टाइप रो आरएनए बाबत रे. गुटे क्लास रे डिस्कशन करमा एमआरएनए बाबत रे, टोटल एमआरएनए बाबत रे जहा जहा अछि हमें डिस्कशन करमा. Another class रे डिस्कशन करमा खाली rRNA बाबत रे, another class रे डिस्कशन करमा खाली tRNA बाबत रे. Okay, so let's start the discussion about the types of different RNA. हमें RNA जते बेले देखु छु, RNA के broadly दुईटा कैटेगरी रे में डिवाइड करू छु. One is your genetic RNA and another one that is the non-genetic RNA. Okay, genetic RNA माने काना, जदि हमर RNA का act as genetic material, से टाइप पर RNA के कहू छु हमें काम बेले कि genetic RNA. जेंदे कि हमें डिस्कशन करथला जे किछटा भाइरस अछन, एंड हमें फ्रांकेल कॉन्ड्रेट एक्सपेरिमेंट जेतेले डिस्कशन करथला से टाइम रे देखुथला जे टोबैको मोजाइक वायरस केस रे किए जेनेटिक मटेरियल हिसाब यूज होतला, दैट इज योर आरएनए. सो दैट जदी आरएनए जेनेटिक मटेरियल हिसाब यूज हला तो से टाइप रो आरएनए के कहमा जेनेटिक आरएनए बोली करी कहमा. ओके, सो जेनेटिक आरएनए हमें कहा के कहूछु इफ द आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. If the RNA act as genetic material, then it is called genetic RNA. And हमें डिस्कशन करूतला जेनेटिक मटेरियल हिसाब से जदी काम कला ताके कहला में जेनेटिक आरएनए बोली करी कहला. तो किन केस रे हमर आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस ओनली. फॉर एग्जांपल किछटा वायरस एग्जांपल लेना सम वायरसेस. ओके, बट केन वायरस सम आरएनए वायरस. जेंते कि हमें लास्ट क्लास रे डिस्कशन करतला टोबैको मोजाइक वायरस, दैट इज आरएनए वायरस. तार पाके जेनेटिक मटेरियल की होचे, दैट इज आरएनए होचे. कोरोना वायरस, दैट इज योर RNA virus. HIV virus, that is your RNA virus. इमनकर केस रे RNA act as genetic material if RNA carry the genetic information and if RNA that transfer from one generation to another generation, then that is known as your genetic RNA. But आगुटे टाइप रो RNA जहा के कहूछु हमें non genetic RNA बोली करी कहूछु. Non genetic RNA हमें कहा के कहमा if RNA not acting like the genetic material. Okay, if RNA is not acting as genetic material. यदि RNA टा जेनेटिक मटेरियल हिसाब जति से काम नहीं करबार तो ताके कमान जन नॉन जेनेटिक RNA. जेनेटिक मटेरियल हिसाब जति काम नहीं करबार इधर किछि अलगा रोल थिबा, राइट. दे हैव सम अदर रोल्स इन द सेल. दे हैव some other roles in the cell. सेल रे इमानकर अलगा रोल रहउचे. काना काना रोल रहउचे हमें इनो बेसिकली डिस्कशन करमा नॉन जेनेटिक आरएनए रे. फॉर एग्जांपल नॉन जेनेटिक आरएनए रो फॉर एग्जांपल हला दैट इज योर एमआरएनए हला, दैट इज द मैसेंजर आरएनए. देन आरआरएनए हला, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए. देन टीआरएनए हला, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए. ओके, इमान जेनेटिक मटेरियल हिसाब काम नहीं करबार. इमान सेल रो इमानकर किछि अलगा रोल रहउचे, अलगा किछि काम रहउचे, राइट. कार के नेला एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए इमान को कहला में नॉन जेनेटिक आरएनए बोली करी कहला, राइट. तो हमर पखे आरएनए जेन अछि टोटल आरएनए के हमें दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड कला. वन इज योर जेनेटिक आरएनए एंड अनदर वन दैट इज योर नॉन जेनेटिक आरएनए. Okay, if RNA act as genetic material, that is in some viruses, for example tobacco mosaic virus, coronavirus, HIV virus, then that is called as genetic RNA. But in some cases all the
बाकी जदि हमें देखमा all the RNA that are not acting like the genetic material. If the RNA not act as genetic material, then that type of RNA is called as non-genetic RNA. And here in the example je dekhma mRNA, rRNA and tRNA, these are the non-genetic RNA. Overall hमें differentiate कला. तब पर देखो हमें mRNA, rRNA and tRNA भितरे slightly हमें difference देखो. Okay. Just okay. mRNA, rRNA and tRNA भितरे काना काना हमर normal differences रहउचे तर बाबत डिस्कशन करबा. mRNA माने काना messenger RNA. mRNA that stands for messenger RNA. mRNA means what? Messenger RNA. Okay, rRNA that stands for ribosomal RNA. Ribosomal RNA. Okay, you know M रो माने हला messenger, you know R रो माने हला ribosome, right? And tRNA that stands for transfer RNA. Transfer RNA. ओके, तो इमान कर तीन जन कर जदि हमें डिस्कवरी देखमा केन टाइप रो आरएनए के डिस्कवर करथिले इनो क्वेश्चन आसी पारे. mRNA was discovered by a biologist करना हला कुंज. rRNA was discovered by Crick and mRNA that was discovered by Monard, Jacob and Monard, and rRNA was discovered by Kunz and tRNA was discovered by Crick. तो देखो mRNA में जितेले देखु छु डिस्कवरी तीन जन का डिस्कवरी हमें जितेले देखु छु mRNA that was discovered by Jacob and Monard. Jacob and Monard. Whereas rRNA that was discovered by Kunz. Discovered by Kunz. Whereas tRNA that was discovered by Crick. Discovered by Crick. Okay, केन टाइप RNA के डिस्कवर कला में देखला. तापरे असला mRNA, rRNA, tRNA रो काम काना ही हिसाबे जदि देखमा mRNA काना करसे that carry the genetic information from DNA. DNA नो information टा के ट्रांसफर करोचे मैसेज धरि के आसुचे कहार नो DNA नो, राइट. तो it carry the genetic information. It carry the genetic information. It carry the genetic information from DNA. Because देखो हमर काना हिस्से देखो जते बेले DNA नो RNA तैयारी होचे. सपोज एटा DNA हला. Okay, DNA नो हमर काना तैयारी हला RNA तैयारी हला. Suppose this one that is the mRNA. This one that is your mRNA तैयारी हला. सब बेले RNA टा केनो तैयारी हिस्से DNA नो तैयारी हिस्से. DNA नो जिते बेले RNA तैयारी हला that is your mRNA तैयारी हला. mRNA पाखे mRNA टा काना करसी तारपरे mRNA that helps in the protein synthesis. mRNA पाखे काना अछि जे प्रोटीन जन सिंथेसाइज बस इंफॉर्मेशन अछि. बट mRNA निके प्रोटीन सिंथेसिस करबार इंफॉर्मेशन टा असला केनु.
mRNA के असला कणा सिंथेसिस करबार इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस करबार इंफॉर्मेशन बट असला केनु दैट इज फ्रॉम द डीएनए तो गुटे सेल रे जते बेले प्रोटीन सिंथेसाइज होउची व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन विल सिंथेसाइज तार इंफॉर्मेशन केनु प्रेजेंट अछि डीएनए पाके प्रेजेंट अछि बट डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज नाही करबार डीएनए विल मेक ए एमआरएनए ओके mRNA कणा कला दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए that carry the information from the DNA, then mRNA will make the protein by the help of ribosome. Right? तो information टा के carry करूचे, carrier of the information होचे के that is the mRNA. जैसे कि हम और जैसे बोले देखो चो हमर डे टू डे लाइफ रे हमर कैंसी भी information के carry करूचे. हमको हमर ने के जो गोटे चिट्ठी टे आसला हमर ने के चिट्ठी धरि के आउचे, पोस्टमैन धरि के आउचे, मैसेंजर धरि के आउचे. Right? Just like that डीएनए नो इंफॉर्मेशन धरि करी के आसला एमआरएनए धरि करी आसला एंड से इंफॉर्मेशन टाके केन हिसाबे एक्सप्रेस कराला प्रोटीन हिसाबे से देखे से एक्सप्रेस कराला राइट सो दैट एमआरएनए के कहू हम काम बोली करी मैसेंजर आरएनए दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए बट आरआरएनए रो काम काना देखा आरआरएनए रो काम होचे जे दैट इज द राइबोसोमल आरएनए हम जते बेले राइबोसोम देखुछु राइबोसोम रे दुईटा ही जिनिस प्रेजेंट थिसे गुटे हला आरएनए प्रेजेंट थिसे अनदर वन देयर इज द प्रोटीन हम जते बेले राइबोसोम देखमा राइबोसोम रे दुईटा ही जिनिस प्रेजेंट थिसे राइबोसोम रे टू कंपोनेंट्स राइबोसोम रे दुईटा कंपोनेंट्स अछि काना काना गुटे हला आरएनए प्रेजेंट थिसे एंड तार संगे प्रोटीन्स थिसे किछटा आरएनए एंड किछटा प्रोटीन्स हमें राइबोसोम रा स्ट्रक्चर देखि दिमान दे आर जस्ट लुकिंग लाइक दिस राइबोसोम बट राइबोसोम रे काना माने प्रेजेंटेशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम आरएनए ओके एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन्स और किछि काना प्रेजेंटेशन प्रोटीन माने प्रेजेंटेशन दीज आर द प्रोटीन्स केन टाइप रो प्रोटीन थिसन काना थिसन केन टाइप रो आरएनए थिसन डिस्कशन करबा तो राइबोसोम जते बेले देखमा राइबोसोम रा स्ट्रक्चर तैयारी करबार लगी के हेल्प करूचे आरएनए तैयारी करूचे राइट राइबोसोम रा स्ट्रक्चर रे दुईटा जिनिस प्रेजेंट अछन दैट इज द आरएनए प्रेजेंट अछ प्रोटीन प्रेजेंट अछ तो राइबोसोम रा स्ट्रक्चर तैयारी करबार लगी के हेल्प कला आरएनए हेल्प कला देन दिस टाइप ऑफ आरएनए विल बी कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए सेट टाइप रो आरएनए के में काना कहमा राइबोसोमल आरएनए कहमा और आरआरएनए बोली तो राइबोसोमल आरएनए दैट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ योर राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए टा कहार स्ट्रक्चरल पार्ट हला राइबोसोम रो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट of the ribosome राइबोसोम रो स्ट्रक्चरल पार्ट होचे के दैट इज द आरआरएनए tRNA that stands for transfer RNA. Why it is called as transfer RNA? Because transfer करासे कहा के ट्रांसफर करासे एमिनो एसिड देखो काना कहूचे it transfer the amino acid कहा के ट्रांसफर करोचे एमिनो एसिड ए माने एमिनो एसिड लिखली ओके टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस to the site of protein synthesis ओके काना कहला देखा tRNA रो काम काना ट्रांसफर आरएनए कहूचो ट्रांसफर आरएनए इथिर लागि कहूचो जे हमर tRNA सपोज दिस इज tRNA हला इट इज जस्ट लुकिंग लाइक दिस तार में सेपरेट स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करमा tRNA कहा के ट्रांसफर करसे देखो tRNA काना करबा दिस वन दैट इज द tRNA हमर साइटोप्लाज्म रे फ्री रे केन माने बुलुचन एमिनो एसिड माने दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म राइट एंड हमर प्रोटीन जते बेले तयारी हेसी प्रोटीन टा कहार जॉइन हेले प्रोटीन तयारी हेसी बहुत सारा एमिनो एसिड मानकर जॉइनिंग हेले काना तयारी हेसी प्रोटीन तयारी हेसी सो मेनी नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टू मेक द प्रोटीन बट जते प्रोटीन तयारी होची
से प्रोटीन तैयारी गला टाइम रे काना दरकार बहुत सारा एमिनो एसिड मान को जॉइन कराबार अछि तो एमिनो एसिड मान को केन के नबार के पड़बा mRNA के नबार के पड़बा बिकॉज़ mRNA दैट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस तो tRNA काना करसी एमिनो एसिड मान को पिक करसी एमिनो एसिड के नबा ओके tRNA विल पिक द एमिनो एसिड tRNA एमिनो एसिड के पिक कला एनी एमिनो एसिड के नैकरी केन के जीवा mRNA के जीवा ओके सपोज दिस वन दैट इज tRNA इस जगह के कहा के धरि के आसला एमिनो एसिड के धरि के आसला देन अनदर tRNA आसबा से भी tRNA कहा के धरि के आसबा आ गुटे एमिनो एसिड के धरि के आसला एंड दुई एमिनो एसिड भीतर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वन बाय वन एमिनो एसिड के mRNA निके नै करी आसुचे के दैट इज द ट्रांसफर RNA और tRNA तो tRNA काना करूचे यू नो सपोज एमिनो एसिड अच्छे एंड दिस वन इज योर tRNA ओके tRNA विल पिक द एमिनो एसिड एंड एमिनो एसिड के नै आने करी केन के दउचे mRNA के दउचे एंड एमिनो एसिड मान को जॉइनिंग करबार लागि हेल्प करूचे सेते लगे ताके मैं काना कहूछु दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांसफर RNA बोली करी कहूछु tRNA राइट तो इता बाबद रे फिर हम समस्तंकर बाबद रे डिटेल डिस्कशन करवा ओवरऑली डिफरेंशिएशन करी करी हम आज फर्स्ट डिस्कशन करूछु एटा जे तीन जनकर भितरे बेसिक डिफरेंस काना अछि तापर देखो टोटल सेल रे हम जतले देखमा सबुतरु मोस्टली सबुतरु अधिका केन RNA थिस क्वेश्चन आसी इन एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन आसी जे आउट ऑफ दिस mRNA RNA tRNA व्हिच वन दैट इज द मोस्ट अबंडेंट RNA मोस्ट अबंडेंट माने सबुतरु अधिका केन RNA प्रेजेंट थिस सेल रे that is your rRNA approximately 80% of total RNA approximately 80% of total RNA is rRNA 80% माने this is called as most abundant RNA मोस्ट एबंडेंट RNA इथिर लई कहूछु एबंडेंट माने मोस्टली सब जगह रे देखबार के मिलुचे सबथुरु अधिका देखबार के मिलुचे दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट एबंडेंट RNA व्हिच वन इज द मोस्ट एबंडेंट RNA दैट इज द rRNA क्वेश्चन है सबथुरु हाईएस्ट अमाउंट रो RNA केनटा दैट इज द rRNA राइट तापर हम जे देखमा tRNA हम जेतेले देखुछु this is approximately 10 to 15% of total RNA 10 to 15% of the total RNA that is the tRNA and mRNA हम जे देखमा this is approximately 5 to 10% of total RNA ओके तो हमें मोस्ट अबंडेंट RNA कहा के कहना राइबोसोमल RNA और rRNA के कहना मोस्ट अबंडेंट RNA ओके एंड बाकी टा हमर कम रहउछ 5 to 10% ओनली दैट इज योर mRNA एंड tRNA जते देखमा दैट इज 10 to 15% ऑफ द टोटल RNA दैट इज योर tRNA डिफरेंस एतकी रहला ओके आउट क्वेश्चन है सबुतरु इ जेन तीनटा टाइप रो mRNA RNA tRNA देखला इमानकर भितरु सबुतरु शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान कहा दैट इज द mRNA रो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान माने कम टाइम रो लागि से एग्जिस्ट करसी तो mRNA हम जते देखबा इतर रहउछ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान ओके शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान कहा रहउछ mRNA rRNA के कहना दैट इज द मोस्ट एबंडेंट RNA एंड tRNA रो गुटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होउछ दे दिस इज योर सोल्यूबल RNA इधर के कहा जाउछ सोल्यूबल RNA okay why it is called as soluble RNA because this is soluble in NaCl sodium chloride संगे this is soluble है and another way रे इधर के भी कहा जैसे जे हमर जेहेतु गुटे जागर आ गुटे जाके ट्रांसपोर्ट होउचे rRNA टा bring the amino acid साइटोप्लाज्म रे बुलुचे दैट्स व्हाई soluble है बोली कि साइटोप्लाज्म रे बुली पारुचे सेते लगी ताके soluble RNA बोली कि कहसो
एंड सॉल्युबल आरएनए तो ए सतिन लगी ताकि हमें एस आरएनए बोली करी भी कहि पारमा एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर सो रखितो जे दिस वन दैट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए टीआरएनए आरआरएनए एमआरएनए तीन जनकर भितरु टीआरएनए टा हला दैट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए छोटी आरएनए ओके तीन जनकर भितर तीन जनकर गुटे कैरेक्टरिस्टिक्स आरआरएनए दैट इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए mRNA that is the shortest lifespan and tRNA that is the soluble RNA or sRNA or smallest RNA बोली करी कहूचु ताके एटा गला थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन जेनेटिक RNA that is your mRNA RNA and tRNA मन को भितरे स्लाइड किछिटा डिफरेंसेस हमें डिस्कशन कला बट किछिटा सम अदर RNA बापदरे हमें डिस्कशन करमा एटा तो नॉर्मल नॉन जेनेटिक RNA बट आउ किछिटा भी नॉन जेनेटिक RNA अछि जार बाबदरे हमें स्लाइटली किछि किछि डिस्कशन करमा वन ऑफ दैट आरएनए जहा के कहसु एसएन आरएनए गोटे हला हमर काना दैट इज योर एसएन आरएनए माने काना एसएन आरएनए रो फुल फॉर्म हला स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ओके इट इज जस्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएन आरएनए okay small nuclear RNA देखो these are found in nucleus and they have very small size but इमन कर काम कना SNRNA these are the part of your spliceosome कहां कहला the SNRNA are the part of spliceosome कहार पार्टन spliceosome रो पार्टन spliceosome कहा के कहसु डिस्कशन करबा আজি बेसिक नॉलेज समस्तंकर बाबद रे थाउ हम spliceosome काना एटा गुटे प्रोटीन और आरएनए रो गुटे कॉम्प्लेक्स है spliceosome that is a complex of protein and RNA proteins and RNA ताके कहसु हमें काम लिखरी स्प्लाइसोसोम बट ई प्रोटीन और आरएनए रो जन कॉम्प्लेक्स अछि प्रोटीन अच्छे और आरएनए अच्छे बट इनो जन आरएनए अच्छे से ताके कहउछु स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोली करी कहउछु जे तो न्यूक्लियस रे रहउछु दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस राइट एसएनआरएनए and protein मिसी गुटे कॉम्प्लेक्स तयारी करछन ताके कहना spliceosome so this one that is your spliceosome हला this one that is having the protein and this one that is the RNA it हला हमर protein there is presence of some protein and this one that is the RNA but ये RNA के कहना snRNA okay but ये टोटल देके कहला में spliceosome बोली करी कहला इस spliceosome रो काम करा so that helps in the RNA splicing केंद्र हेल्प करसी स्प्लाइसोसोम टा स्प्लाइसोसोम that helps in the RNA splicing देखो SNRNA जतले देखमा स्प्लाइसोसोम that helps in RNA splicing RNA splicing माने का फिर उडासला आउट ऑफ वर्ड आरएनए स्प्लाइसिंग माने आरएनए स्प्लाइसिंग रो माने फर्स्ट लिखि दउछ देखो आरएनए स्प्लाइसिंग रो माने हला रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द आरएनए रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एमआरएनए फिर गोटे वर्ड आसला काना दैट इज द इंट्रॉन्स का इंट्रॉन्स माने हला दिस इज द नॉन कोडिंग पार्ट of the mRNA non-coding part of mRNA out word asla non-coding mane kana non-coding ro mane hla they are not having the information for protein not having the information for protein ओके देखो एबे बोल से देखो
जेतेबेले हमर mRNA तैयारी होची जेतेबेले हमर mRNA तैयारी हैला सपोज दिस वन दैट इज योर mRNA तैयारी हैला ओके mRNA रे सब सीक्वेंस हमें जेतेले देखमा mRNA रो नेक्स्ट काम कहा प्रोटीन सिंथेसाइज करबा mRNA पाखे प्रोटीन सिंथेसिस रो इंफॉर्मेशन अछि बट mRNA रो टोटल जितके पार्ट अछन all the parts that are not involved in the protein synthesis some part of the mRNA have the information for the protein synthesis and some part do not have the information for the protein synthesis right suppose this part that is having the information for the protein synthesis that is called as exon okay इधर पके काना अच्छे they have the information for protein synthesis इधर पके protein synthesis information अच्छे but this तार पर हमर काना अच्छे आगुटे part अच्छे जहाँ के कोचो intron का काना they are not having the information for the protein synthesis not having information for protein synthesis ओके गोटे कर पाखे प्रोटीन सिंथेसिस इंफॉर्मेशन अछि आ गोटे पाखे इंफॉर्मेशन नाही ना एक्सन के लिखना ई इंट्रॉन के लिखना आई ओके एंड दिस वन अगेन इंट्रॉन एक्सॉन अगेन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एंड द हिसाब प्रेजेंट अछि आरएनए रो सबु एमआर हमर जेने एमआरएनए हला दिस वन दैट इज द नॉर्मल एमआरएनए रे आ दुईटा पार्ट प्रेजेंट थिसी तर गोटे साइड रे 5 प्राइम एंड रे थिसी गोटे हेड पार्ट and 3 prime end re tar present is tail part this one that is the RNA mRNA but mRNA this is not ready for the protein synthesis ये mRNA ready नहीं हुआ तनी protein synthesis रो लागी because protein synthesis रो लागी only हमको दरकार केन part gene part पाखे information अच्छे for the protein synthesis but ये जन mRNA बनला इते के कहना pre mRNA premature mRNA this is not ready for the protein synthesis because all the part of the mRNA that is not having the information for the protein synthesis some part have the information for the protein synthesis that part is called as exon and some part do not have the information for the protein synthesis that part is called as intron right but हमको खाली दरकार कना we only require the एक्सॉन हमको दरकार खाली काड़ा एक्सॉन दरकार एंड इंट्रॉन सब दरकार अच्छे के इधर पाके तो प्रोटीन सिंथेसिस रो इंफॉर्मेशन नाही न से सीक्वेंस नाही न इधर पाके सो दैट हमर काना हम ई जगह के आसबा केन माने आसबे ई जगह के आसबे हमर किछटा प्रोटीन दैट इज द स्प्लाइसोसोम ओके तो इनके असले केन माने स्प्लाइसोसोम माने असले तो हमर जेन पार्ट दरकार नाही न केन पार्ट हमको दरकार है ना हमको इंट्रन पार्ट दरकार ना न ये पार्ट्स मन हमको दरकार अच्छे के दरकार नाही न ओके सो दैट काना हबा ई जगह के असबा किए दैट इज योर स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसोसोम जते बेले असबा स्प्लाइसोसोम कहा के धरि के आउछ आरएनए के धरि के आउछ एंड तर प्रोटीन धरि के आउछ that will comes to bind with this introns कार संग आसे के बाइंड करबा इंट्रॉन मान को संग आसे के बाइंड करबा ओके तापरे इंट्रंस मान को ताके सेपरेट कर दबार छै खाली जॉइन कर दबार छै कहा के एक्सन मान को तो नेक्स्ट हमें केनता देखमा देखो ठीक छोट कर दो ओके नेक्स्ट हमर केनता हबा देखो हमर इजन आरएनए अछि इंट्रन अछि इंट्रन दैट विल नाउ पुल आउट इंट्रन ता पुल आउट हिजबा कहार नो पुल आउट हिजबा हमर टोटल एमआरएनए रु एबे देखो केनता दिसबा नाउ इट विल जस्ट लुक लाइक दिस
ओके केनरा होचे लेट्स सी हियर देखो हमर जन इजन आरएनए अछि दिस वन दैट इज द एसएन आरएनए ई कणा कला ई जन इंट्रन्स माने अछि मन को घिचु छै तो मन को कणा करछ टाणु छै सो दैट हमर इंट्रन्स माने दिस वन दैट इज योर इंट्रन्स एटा हला हमर एक्सॉन बट इंट्रन्स मन को पुल करियानु छै के पुल करियानु छै दिस वन दैट इज योर स्प्लाइसियोसोम इता के कहू हम काम बोली करी स्प्लाइसियोसोम इधर मेकानिज्म बहुत डिटेल रे डिस्कशन करबा जस्ट ओवरऑली काना हो मैं बता दो तुमको एंड दिस आरएनए दैट इज योर एसएन आरएनए ई आरएनए टा हमर केन आरएनए एसएन आरएनए दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्प्लाइसोसोम एंड स्प्लाइसोसोम रा काम कना दैट विल पुल आउट द इंट्रन्स फ्रॉम द प्री एमआरएनए पाके सब पार्ट दैट आर नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस सो दैट ई प्री एमआरएनए रो इंट्रन्स मन को पुल कर देला परे एबे हमर जॉइनिंग हे जिबा कहार एक्सॉन मानकर जॉइनिंग हे जिबा एंड टोटल सेपरेट हे जिबा के टोटल सेपरेट हे जिबा हमर इंट्रन्स ता तो इंट्रन्स टोटल सेपरेट हे जिबा बाहरी आसबा एंड जॉइन हे गेले केन माने एक्सॉन माने सब जॉइन हे जिबे ओके तो इनो बाहर के बाहरी आसला के बाहरी आसला समस्त को इंट्रन्स मान को नहीं करी पले आसला किए दैट इज स्प्लाइसोसोम सब इंट्रन्स मान को नहीं करी पले आसला this one that is your intron this one that is your intron this one is your introns मन को घिची आनला सेपरेट करी आनला टाणी आनला मन को so that now we have exon only एबे mRNA पाके खाली काना আছে exon আছে and exon have the information for the protein synthesis देखो ना exon that is having the information for the protein synthesis but introns that are not having the information for the protein synthesis तो protein synthesis करबार लगी mRNA के दरकार खाली काना exon दरकार introns नो requirement नहीं नो so that introns के रिमूव करबार लगी के हेल्प कला दैट इज स्प्लाइसोसोम हेल्प कला एंड से स्प्लाइसोसोम रे काना प्रेजेंट थेसी आरएनए प्रेजेंट थेसी एंड जेन आरएनए प्रेजेंट थेसी ताके कहतो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए दिस इज वेरी स्मॉल साइज ऑफ आरएनए एंड दिस इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए न्यूक्लियस रो भितरे अछि न्यूक्लियर आरएनए वेरी स्मॉल साइज दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एसएनआरएनए तो एसएनआरएनए हेल्प करछ हमर काना करबार लगी SNRNA that is the part of your spliceosome and spliceosome help करछ RNA splicing रो माने काना रिमूवल ऑफ इंट्रन्स फ्रॉम द mRNA रो इंट्रन्स के रिमूव करबा ले हेल्प करछ से प्रोसेस के कहना RNA splicing बोली करी कहला राइट एंड इंट्रन्स माने काना that is the non coding part of the mRNA non coding part माने काना the part of the mRNA that is not coding for the protein that is not having the information for the protein synthesis ओके तो इटा नंबर काना दैट इज योर एसएनआरएनए काना हमें जानना इन डिटेल्स हमें जानना व्हाट इज एसएनआरएनए ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करमा आउ किछटा कांसेप्ट आउ किछटा टाइप रो अदर टाइप ऑफ आरएनए बाबत रे हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करमा ओके जने कि एसएनओ आरएनए काना एसएनआरएनए गला तबरे होचे एसएनओ आरएनए काना तार बाबत रे डिस्कशन करमा तबरे एंटीसेंस आरएनए हमें कहा के कहउछु तार बाबत रे डिस्कशन करमा इटा सब शॉर्ट नोट रे आसबा ओके व्हाट इज एसएनआरएनए शॉर्ट नोट रे आसला लिखि परमा दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स एंड स्प्लाइसोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स वन इज योर प्रोटीन एंड दैट इज योर आरएनए एंड केन आरएनए दैट इज योर एसएनआरएनए एंड एसएनआरएनए रो काम करना दैट विल पुल आउट द इंट्रन्स केनदा करी पुलिंग आउट करसी तार सेपरेट मैकेनिज्म अछि स्प्लाइसिंग पाका पाके दुई तीनटा क्लास लागो हमको खाली इजन मैं ओवरऑली कहि देली वेरी सिंपल वे रे तुमको बता देली ओवरऑली बट दिस इज नॉट वेरी सिंपल प्रोसेस इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस केनदा करी हेसी कान हेसी डिटेल मैकेनिज्म अछि हमर कोर्स रे आरएनए स्प्लाइसिंग सेपरेट आरएनए स्प्लाइसिंग रे लॉन्ग क्वेश्चन हे परबा
ओके आरएनए स्प्लाइसिंग अच्छी आरएनए एडिटिंग बाबद रे अच्छी बहुत सारा कथा हमें डिस्कशन करमा तो आज एतके थाउ नेक्स्ट क्लास रे वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर I think you all may enjoy this session. If any doubt, you can write to us. Our chat box is open for all of you. Thank you.